Ahmad Raza is not your average auto mechanic. It's not just his finely manicured mustache and somewhat dapper haircut that set him apart from his colleagues. Ahmad Raza is not from around these parts. Tragic events leading to the murder of his father and brother back home in Afghanistan led him to flee the war-torn country nearly 2 decades ago. With 4 sisters and a sick mother in tow, Ahmad Raza set up house in Islamabad, Pakistan. As most Afghan refugees did at the time, he began to eke out a living working odd jobs at the local fruit and vegetable market. Things changed the day a friend mentioned an opportunity to learn some new skills. वो मेरा एक दोस्त बताया दोस्त साबर मेरा एक दोस्त बताया कि उधर हाशू फाउंडेशन उधर कंप्यूटर है इंग्लिश है और मैकेनिक है सलाई सब चीज़ें बोलते कि मैकेनिक मेरा बहुत शौक है और मैं इधर हाशू फाउंडेशन आया था बस मैं 3 महीने उधर हाशू फाउंडेशन ट्रेनिंग किया. After 3 months of training as an automobile mechanic, Ahmad Raza started regular work at Suzuki Azim Motors in Islamabad. His appetite for learning kept growing. हर दिन के इधर काम करिए एक तजुर्बा 30 दिन 30 तजुर्बा हो गया. It wasn't just the work that kept him there. Ahmad Raza finally began to feel at home. क्या बताया कि मसला एक रिश्ता है मंदी को रिश्ता नहीं देखो मजदूरी है. मैं पहले बात अगर होगा फ़र्क है मेरे किधर इधर आता ये मसला नहीं वो सब मुझे बहुत कदर करते हैं सब मेरा दोस्त है. एक दिन अगर मैंने आया तो वो सब फोन किया कि तो किधर है खान. Today, Ahmad Raza supports his 4 sisters with a smile on his face. He has earned the professional and personal respect of his peers. While he is hopeful for the future, his past still lives with him. The refugee experience is not one easily forgotten. तुम एक बार मुहाजरत करो बहुत पता होगा कि मुहाजरत मुश्किल या नहीं. देखो ये कि को वतन नहीं रिश्तेदार नहीं शनाख्त नहीं खुसूसन मेरा मुहाजरत बहुत मुश्किल होगा कि मेरा आमी फलाज मगजी हो गया और पता नहीं किस अस्पताल किधर है डॉक्टर किधर है और दूसरी मसला पहले पैसा की मसला है. एक बार तुम मुहाजरत करो बहुत पता होगा कि मुश्किल है या नहीं मुश्किल बस अल्लाह पता है दिल पता है. Over the last 34 years, an estimated 3 million Afghans have lived through similar experiences. In her 2-bedroom apartment on Khiaban Sir Sayyid in Rawalpindi, Suraya Noor Muhammad is also fighting her way out of the refugee life. The toll taken by the civil war in Afghanistan is what brought her and her family to Pakistan 21 years ago. वजारत दिफा के खातिर वो लड़ाई करती है औरतों एकदम कहती औरतों काम नहीं करती ये से मैं घर में बैठी राकेट के हमारे घर में आया था. मेरा पास पैसा नहीं थी 12,000 ससुर देता है और 3-4 फैमिली एक जगह हो गई और एक लॉरी नहीं तराक में किराया करती सब तोला सामान के बाकी मंदिर उनके जलालाबाद में आया उनका वजह से वो पाकिस्तान में आया. Suraya began to teach at a school for Afghan kids in the area, but struggled to make ends meet.
ये आशू फाउंडेशन की तारीफ होता है लोग अफ़गानी लोग कहती है कि इतना कारोबार करती है ये से मुझे बहुत शौक थी खैरती से सलाई में टेलर्स Suraya enrolled herself in the sewing training program at the Hashoo Foundation. 3 months later, she noticed a very fundamental difference in her approach towards sewing. नहीं कपड़ा में मुझे ज़रूरत नहीं थी मैं सलाई करती मैं उधर आशू फाउंडेशन में मैं ज़रूरत पैदा करती उधर मैं तरीक़ा में देखती कि किस किस्म बारिश हो गई मैं तावानी नहीं होगा और मुश्तरी के अगर कपड़ा ख़राब हो गया वो तावान करती उसके बाद मुझे ज़रूरत आया Suraya soon gained a reputation in the community as a reliable and talented seamstress. Business began to pick up. This, in turn, enabled her to deal with certain pressures to return to Afghanistan with more strength. कहती लड़कियों से फरोख करो और इधर आ जाओ ये घर खरीद करो मैं इतना मजबूरियत की खातर बहुत परेशानी के खातिर मैं इन बच्चों के मैं इधर सबक पढ़ती और ज़ामत करती क्यों मैं ये काम करती सलोई बहुत अच्छा चीज़ है ये आम संगीन है आम बाइज़्ज़त है With the festival of Norouz just around the corner, Suraya has been busier than ever. With the extra cash coming in, Suraya is finally celebrating Norouz comfortably. पहले कहती नवरोज़ मैं एक बाना करती या मैं खुद बीमार हूँ या हवा सर्द है मतलब एक बाना करती There are, of course, bigger changes that this money has made in Suraya's life. मेरा जिगर दर्द करती है ये से डॉक्टर के खातिर मुझे बलकतन में कोशिश करती कि मैं मतलब डॉक्टर के नहीं चलती उस वक्त बहुत परेशानी अभी अगर मैं बीमार हो गई मैं कहती चलो ये कमीज़ के मतलब डॉक्टर के पैसा ये बहुत मुझे इफ्तिखार के Suraya and Ahmad Raza are just two of nearly 1,700 urban Afghan refugees whose lives have been transformed over the last 3 years through vocational training projects funded by the US State Department's Bureau of Population, Refugees and Migration and implemented by the Hashoo Foundation. The Hashoo Foundation is the first national NGO to be funded directly by this bureau. The project focuses on enhancing the skills of trainees to enable them to earn better livelihoods. In addition, the project is also responsible for placement of trainees in jobs, or, if they so desire, positioning for self-employment. This was by no means an easy task to begin with. Apart from the obvious logistical challenges, there were more subtle, more complicated problems to be dealt with. एक साइकी डेवलप हो गई थी कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ को रखना रिस्क लेने के बराबर होगा दूसरा ये था एम्प्लॉयर को मतलब जो एक उन्होंने हमें फीडबैक दिए LDS के दौरान कि हमें फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ तंग करती हैं कि आपने ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ रखा हुआ है मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है आपने किस बेसिस पे रखा है तो उनका एक स्ट्रिक्ट आंसर होता था मोर दैन 85% एम्प्लॉयर का कि हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ को नहीं रखेंगे. Eventually, it was the Hashoo Foundation's reputation that gave employers confidence in hiring trainees. It has a name in the market, so people trust and people respect. Those were early days. The project has since expanded considerably. In addition to already up and running training facilities in Rawalpindi and Islamabad,
A new center has been established in Peshawar, a city with a high concentration of Afghan refugees. This has not only enhanced the credibility and efficiency of the project, it has also changed widely held perceptions. तकरीबन डेली मुझे 6 से 7 कॉल्स आती हैं कि हमें आपके ये ट्रेनीज चाहिए, और हमारे पास इस वक्त जो है कि पिछले फेजेस से ट्रेनीज नहीं है अवेलेबल। ट्रेनीज मतलब जो हैं, कुछ लोग अफगानिस्तान बैक पर रिपेट्रेट हो गए हैं, जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे पास ट्रेनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर्स का जो है डिमांड है वो ज़्यादा है। The rising demand for trainees and the continuing challenges faced by Afghan refugees in Pakistan means that there is much work still to be done. When you go and meet your trainees and you interview them and you interact with them, and they tell you that they were like doing garbage collections in the past, and now they're earning something like 6,000 to 7,000 rupees, maybe 10,000 rupees, and a respectable job and respect from their employers. There can't be anything more than this satisfying for yourself.